before boarding the ship to France. So, in 11 September 1949, finally Bhupen Hazarika travels from Visakhapatnam to Colombo by the air. So he was scheduled to stay there for 2 days before boarding the ship to France. तो भूपेन हजारिका कोलंबो पहुंच के 2 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे बिकॉज एज पर द शेड्यूल ऑफ द प्लानिंग. तो वहाँ 2 दिन रहने के बाद वो लोग फ्रांस के लिए रवाना होंगी, वो भी जहाज़ के द्वारा. It was the first time that I was leaving my beloved India. So for the first time in his life, Bhupen Hazarika now traveling to America. So before that, he never went any abroad. A flower from a garden of Assam, which was given to me by younger Mahi at Kanhikuchi airport, was drying out in my pocket. So on the first day of his journey, his family member went to see of him at Kanhikuchi airport. So among the family member, उनका एक माही भी साथ गए थे. माही मतलब the younger sister of भूपेन हजारिका's mother. तो उनका माही ने भूपेन हजारिका को एक फूल दिया था और वो फूल उनके पॉकेट में रखे हुए थे. So that flower was almost dried up now. वो सूख चुका था. तो उस सूखे हुए फूल को देखे वो नॉस्टैल्जिया हो जाते हैं. एंड माई माइंड वॉज assailed by the thoughts of my dearest Assam, a land whose likes you could not find even if you spend your whole life searching. तो भूपेन हजारिका यहाँ पर अपनी स्टेट को बहुत याद करते हैं, असम को. और वो कहते हैं यहाँ पे कि अगर पूरी ज़िंदगी भर अगर असम की जैसा और दूसरा प्लेस ढूंढता रहेगा फिर भी nobody will get anywhere the place like Assam. So from this line it is very clear to us that how much he has the devotion towards his own state, how much he has love, how much he has affection with the land, with the soil of Assam. It is reflect here. Assam was far away, Colombo was quite near. So as far as scheduled by the air flight, now finally he is going to reach Colombo. अब उनके बहुत पीछे असम छूट गया है. The air hostess offered me a few newspapers and journals which included Life, The Times, The Illustrated London News, The Statesman, etc. So inside the flight, the air hostess offered to read some newspapers and journal to Bhupen Hazarika. तो यहाँ पर उन सब का नाम मेंशन है जैसे द लाइफ, द टाइम्स, द इलस्ट्रेटेड लंदन एक्सेट्रा. I could hardly believe my own eyes when I found the Assam Tribune, Puja issue 1949 amongst them. Among those newspapers, he discovered one interesting newspaper, that is the Assam Tribune. So he was very shocked, he was very surprised, and he was very mesmerized whenever he get the Assam Tribune, among including all those newspapers and journal. बिकॉज ऑलरेडी उनको असम की याद सता रहे थे, असम का हर चीज़ उनको एक एक चीज़ याद आ रहा था. तो उस टाइम पे उसको जैसे ही असम ट्रिब्यून मिला वहाँ पर पढ़ने के लिए तो वो मेस्मराइज हो गई थी यहाँ पे. आई रॉट अबाउट इट इन अ लेटर टू द एडिटर मिस्टर फुकॉन फ्रॉम न्यूयॉर्क. सो आफ्टर रीचिंग इन अमेरिका फॉर दिस असम ट्रिब्यून ही हैज़ सेंडिंग ए लेटर ऑफ थैंक्स टू मिस्टर फुकॉन. तो मिस्टर फुकॉन उस टाइम पे असम के द असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का एडिटर थे. तो इसीलिए उन्होंने उनको एक लेटर भेजा वहाँ से. It was quite natural to feel strong urge to learn about the happenings in the valleys and hills of Assam when my eyes fell on the Assam Tribune. जैसे असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर उनके हाथों में आया वो हर एक पन्ना वो पढ़ने लगा. मतलब असम में क्या हो रहा है, असम के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मतलब व्हाट वाज द लेटेस्ट न्यूज़, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द असम. लॉट्स ऑफ क्यूरियोसिटी क्रिएट इन द भूपेन हजारिका's mind. So he started to read every nook and corner of the newspaper.
बट फॉर ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट विशाखापत्तनम ए पार्ट ऑफ आवर कंट्री. जब वो अपने आप वो सोचने लगे, क्या विशाखापत्तनम मेरे देश का पार्ट नहीं है, क्या सिर्फ असम ही हमारे देश का पार्ट है. ही फील लाइक दैट बिकॉज ही इज़ मोर मच attachment. He was much dignified only with the Assam here. So that's why that kind of questions create in his mind. क्या विशाखापत्तनम भारत के पार्ट नहीं है. मतलब उनको ऐसा वो ऐसा फील करा रहे थे कि अपने आप को कि ओनली असम वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट द विशाखापत्तनम. उनकी एक्टिविटी से ऐसा लग रहा था. तो आई हैव सीन दैट वन टेंड्स टू फॉरगेट वरलुमुख when one is at Ujjan Bazaar. तो ही मेमोराइज यार वन ऑफ द मेमोरी ऑफ गुवाहाटी. सो जब वो गुवाहाटी में थे अमेरिका जाने से पहले, जब वो भरलुक में रहते हैं तो वो उजान बाज़ार के बारे में भूल जाते हैं. और जब वो उजान बाज़ार में रहते हैं तब वो भरलुक के बारे में भूल जाते हैं. मीन्स when he was flying towards the America with the help of this aeroplane, at the time the homesickness, the feeling of homesickness, the feeling of state sickness created in his mind. Instead of thinking himself as an Indian, he started to think that he was an Assamese. He was an only Assamese people. He was an Assamese. So that kind of feeling created in his mind. When he was in one place, he forgot another one. When he was in another one place, he remembered another one, like that. So finally, यहाँ पर क्या बोला? When one arrives at Calcutta, he or she remembers Guwahati and the whole of Assam from Dhubari to Shatia. जब कोई असम छोड़ के गुवाहाटी में पहुंचता है तो असम का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाएं उनको याद आने लगते हैं. और at such a moment I tend to forget whether the Assam Tribune is Assamese or Indian. So as soon as one move out of Indian boundary, the tendency arises to love all of India as one loves Assam. तो जैसे इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री में कोई भी इंसान एंटर करते हैं तब उनको भारत वर्ष की याद आते हैं. भारत के हर चीज़ एक एक जगह हर एक कल्चर हर एक लोगों के बारे में उनको याद ज़्यादा सताने लगते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया. तो भूपेन हजारिका ये भूल गए जब उसको ये असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर एयरप्लेन के अंदर मिला था कि असम ट्रिब्यून ये असम का असमीज न्यूज़पेपर है या ये इंडियन न्यूज़पेपर है, ये भी वो वहाँ पर भूल गए थे. The Indian Ocean gradually came to the view along with the green leaves, innumerable coconut trees. There was the city of Colombo, Lanka. The beautiful damsel was soaking up the sun after her birth in the Indian Ocean with her green locks of hair spread free. फाइनली धीरे धीरे भूपेन हजारिका जिस प्लेन पे उड़ान ले रहे थे वो प्लेन नीचे लैंडिंग करने लगे. जैसे वो धीरे धीरे लैंडिंग करने लगे भूपेन हजारिका को इंडियन ओशन का सराउंडिंग में जो श्रीलंका है, श्रीलंका की एनवायरनमेंट मतलब पेड़ पौधे सागर के पानी वो सब उनको क्लियरली दिखाई दे रहा था. एंड द एनवायरनमेंट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एट द टाइम. The view from the aeroplane was indeed mesmerizing. The view from whatever the view he observed from the aeroplane, from the inside of the aeroplane, that was very mesmerizing, that was very beautiful, that was very interesting, that was very attractive. Reaching Colombo, I found Lanka to have become as Anglo-Cyclonese maiden. So finally he reached in Colombo. So after reaching in Colombo, he found that Sri Lanka have become an Anglo-Cyclonese maiden. So in the cafes on the footpath, one could hear music broadcast by Radio Lanka, which had English and Hindi tunes. Rich merchants from Bombay offered a variety of American dresses watched in their stalls. So Bhupen Hazarika noticed that in the cafes of Sri Lanka, on the footpaths, Bhupen Hazarika heard the music which was broadcast by the Sri Lankan radio, which had English and Hindi tunes. और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि rich Parsis merchants from Bombay offered a variety of American dresses and watches in their stalls. Means the environment and atmosphere of the market area as well as the locality, the atmosphere
it seems exactly like Indian. So he doesn't feel that now he is in foreign land. उनको ऐसा फील हुआ कि वो इंडिया में ही है. And I also heard South Indian porters carrying baggage on their backs talk to each other in Tamil. भूपेन हजारिका को ये भी सुनाई दिया. तो साउथ इंडियन पोर्टर्स वहाँ पर उन लोगों का बैगेज कैरी करके आ रहे थे बैग पे, और उन लोगों ने क्या किया तब तमिल लैंग्वेज में बात करते करते मतलब चलते हुए उन्होंने ये भी वहाँ पर दिखाई दिया उनको. There was this French sailor on a 2-day shore leave after a prolonged period in the sea, singing a song that I could not understand a bit. तो भूपेन हजारिका ने जैसे बताया कि उनको कोलंबो में 2 दिन रहना है, फिर वहाँ 2 दिन रह के वो जहाज़ के द्वारा फ्रांस कंट्री को रवाना होंगे. तो यहाँ पर जो फ्रांस कंट्री का जो सेलर है, जो जहाज़ चलाते हैं, उन्होंने 2 दिन का यहाँ पर लीव लिया था. तो 2 दिन वहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर से वो लोग यात्रा शुरू करेंगे. तो तब भूपेन हजारिका को एक गाना सुनाई दिया था, जो गाना उसी शिप का सेलर ने गाया था. सो ए बीट एंड फाइट ए लॉजिंग बैटल अगेंस्ट, वो गाना था अबाउट द फाइट एंड लॉजिंग बैटल्स अगेंस्ट द ड्रिंक्स he had just had. Although I found myself lost in the banter of Indonesia, Burmese, Filipino, Indo-Chinese merchant sailor, my mind shared singing on its way. So all the people, all the sailor as well as all the travelers were gathering in particular places. So many tourists, so many peoples are coming from different parts of the country, like Indonesia, Burmese, Filipino, and Indo-China, and Indian also. So they are gathering together and they're drinking, chatting, dancing, singing, like that they have spending their time. तब भूपेन हजारिका को भी एक गाना याद आया.